Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Key domestic stocks snap two-day winning streak to close with losses of around 0.5%. Rupee jumps 40 paise against the US dollar, and US Federal Reserve and Bank of England hike interest rates by 25 basis points to curb inflation. घरेलू शेयर बाजार में पिछले 2 सत्रों में तेजी के बाद आज हुई बिकवाली लगभग 0.5% घाटे के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया हुआ 40 पैसे मजबूत और बढ़ती मुद्रास्फीति को थामने के लिए अमेरिका में केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व और यूरोप में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दर में की 25 आधारभूत अंकों की बढ़ोतरी। घरेलू शेयर बाजार में पिछले 2 सत्रों से जारी लिवाली का सिलसिला आज थम गया। उतार चढ़ाव के बीच हुए कारोबार के अंत में प्रमुख सूचकांक लगभग .5% घाटे में रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 289 अंक यानी 0.5% बढ़कर 57,925 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 75 अंक यानी 0.44% नुकसान के साथ 17,077 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत थोड़ा सा बेहतर देखने को मिला सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.45% की गिरावट हुई, जबकि छोटी कंपनियों का जो इंडेक्स होता है स्मॉल कैप इंडेक्स वह 0.15% ही नीचे आकर बंद हुआ। Key domestic benchmark indices snapped a two-day rally to close with losses of around 0.5% amid volatility. The Sensex declined 289 points or 0.50% to end at 57,925. The Nifty fell 75 points or 0.44% to settle at 17,077. In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell 0.45% and the small-cap index was down 0.15%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 13 companies gained while 17 fell. Nestle India and Maruti both gained 1.1% and Bharti Airtel rose 1%. On the other hand, SBI plunged 1.7%, Asian Paints and Kotak Bank both declined 1.5%. In sectoral indices at BSE, 8 sectors gained while 12 logged losses. Power sector gained 0.7%, utilities index rose 0.5% and telecom sector added 0.4%. On the other side, realty sector slipped 1%, BankX fell 0.9% and IT sector ended 0.8% down. The overall market breadth was positive as shares of 2,137 companies rose while 1,379 companies fell. A total of 118 shares remained unchanged.
खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं शेयर बाजार पर विशेष रूप से जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक विशेषज्ञ हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। तकनीकी रूप से जुड़े थे लेकिन तकनीकी बाधा के चलते थोड़ी सी गिरावट थोड़ी सी कह लें कि संपर्क में बाधा आई है और हम विशेषज्ञ से चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। आइए नजर डालते हैं इस बीच रुपए की स्थिति पर, जहां आज बढ़िया प्रदर्शन रहा है रुपए का। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 40 पैसे मजबूत हुआ है और ये 82 रुपए 26 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.03% बढ़कर 102.38 पर चल रहा था। The U.S. Central Bank has raised interest rates again, despite fears that the move could add to financial turmoil after a string of recent bank failures. The Federal Reserve increased its key rate by 0.25 percentage points and said more action could be appropriate as consumer prices continue to climb. The Fed has been raising borrowing costs to try to slow the economy and ease pressures pushing up prices, but sharp rate rises have led to strains in the banking system. 2 U.S. banks, Silicon Valley Bank and Signature Bank, collapsed this month, buckling in part due to problems caused by higher interest rates. But authorities around the world have said they do not think the failures threaten widespread financial stability and need not distract from efforts to bring inflation under control. अमेरिका में केंद्रीय बैंक की ओर से ब्याज दर बढ़ोतरी के बाद दुनिया के अनेक केंद्रीय बैंक भी आधार जो ब्याज दर हुआ करता है उसमें बढ़ोतरी की संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। गौरतलब है कि दुनिया भर में मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है, जिसे थामने के लिए केंद्रीय बैंकों की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में यूरोप में, खासतौर से ब्रिटेन में, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आज ब्याज दर में 25 आधारभूत अंकों की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। अब ये दर 4% से बढ़कर 4.25% पर पहुंच गई है। बैंक ने अपने इस नए दर की घोषणा करते हुए कहा कि वहां पर जीवन लागत मूल्य में बढ़ोतरी संबंधी आंकड़े आए हैं, जिसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। श्रोताओं, यहां ध्यान देने की बात यह है कि ब्याज दर में यह बढ़ोतरी चूंकि मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है दुनिया भर में, खासतौर से अमेरिका में जो ताजा आंकड़े आए हैं उसमें ऐतिहासिक स्तर पर मुद्रास्फीति बढ़ी है। इसे थामने के लिए केंद्रीय बैंक की ओर से लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई खास अंतर मुद्रास्फीति पर दिख नहीं रहा है। हालांकि मनोज, in fact, the policymakers remain laser focused on fighting inflation, with the European Central Bank ECB last week announcing a 50 basis point increase in Eurozone borrowing costs. And today, besides what we read out about ECB and US Fed raising interest rates, Norway and Switzerland is also hiking interest rates today to tackle stubbornly high inflation. Though banking sector turmoil, everyone is talking about how it could soon lead to a pause in the US tightening, as has also been hinted by the Federal Reserve. So, there could be a pause, and this is primarily because of the turmoil that has been seen in the banking sector. Meanwhile, we are joined in by Puneet Jain online with us. A warm welcome, Puneet. Thank you. So what we need to find out from you is that although the Fed's decision to increase rates by 25 basis points was in line with the expectations, concerns today were raised by the U.S. Treasury Secretary's statement that blanket insurance for all deposits was not being considered. How do you read this statement, and what ramifications does it have? So, in fact, more important than the Fed decision yesterday
actually was this decision by, or the announcement by the US Treasury Secretary that they will not guarantee all deposits. There's a limit of deposit insurance for $250,000. So see, if you allow unlimited insurance for all deposits, then the bankers will become irresponsible. I mean, they will pass on the entire loss to the government. So what happens is that the losses in the banking sector will have to be borne by the taxpayers. Now that, and if you look at US, they have a total bank deposits of almost $50 trillion. So you can't impose that kind of a huge burden on technically on the taxpayers. So this will become a huge burden, and therefore I think the US government has taken the right call to say that, look, we cannot give unlimited guarantees for bank deposits. The bankers have to be responsible, but they will of course backstop. They already backstopped a few banks. Government will provide reasonable assurance to depositors, but they cannot give a blank check to depositors. And you can understand, I mean, $30-40 trillion of liability cannot be borne by the taxpayers. Okay. We also read out, while you were coming online with us, Puneet, about the Bank of England having raised the interest rates along with Norway and Switzerland. They have, hiked the interest rates. So what will be the effect of this in the coming days? See, what is happening interestingly is that different regions in the world are facing challenges vis-a-vis inflation. So if you look at a place like India, we've already seen moderating. Our inflation, of course, is already lower. We're closer to 6%, and we're expecting inflation to go down to 5%. But in the Eurozone, we got that data a couple of days back, the inflation rate is still above 10%. So it's a double-digit inflation. So they need to keep raising interest rates. Until now, in the last 1 year, if you see, there was synchronized action by all central bankers. So almost all central banks in the world, they raised interest rates to tame inflation. But I think going forward, only some countries or some regions which are still facing very high inflation, they will keep raising rates, like you mentioned, UK and Eurozone banks, central banks. US may pause because there the inflation may come down a little bit, and they have other issues. And countries like India, actually, we are very comfortable with inflation. So you will see differential approach to the inflation situation and interest rates in the world. पुनीत जी, यहाँ पर यानी दो दृष्टियों से स्थिति को हम समझना चाहेंगे। एक और अमेरिका में जो रोजगार संबंधी आंकड़े आते हैं, वहां पर कोई खास यानी कहने की कमी नहीं दिखती, रोजगार के आंकड़े बेहतर आए हैं। दूसरी ओर मुद्रास्फीति भी वहां लगातार अपने उच्चतम स्तर की ओर दिख रही है, तमाम प्रयास किए जाने के बाद भी। उधर दुनिया के कई देशों में रोजगार संबंधी आंकड़े नीचे आते दिख रहे हैं, और दूसरी ओर जो जीवन स्तर की लागत है वो काफी ऊंचे स्तर पर है, मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है। तो क्या ये माना जाए कि जो केंद्रीय बैंक हैं उनके पास नीतिगत उपाय नहीं बच रहे हैं, या पूर्व में कोविड काल में उन्होंने जो अत्यधिक कहने की तरलता बनाए रखी उसका परिणाम झेल रही है दुनिया? मनोज जी, देखिए, कई सारे फैक्टर्स इस वक्त मार्केट इकोनॉमिक्स में प्ले कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप देखते थे कि हर देश में इन्फ्लेशन नीचे था, सप्लाई चेन्स बहुत स्ट्रांग थी। वो ग्लोबलाइजेशन जो है वो अब दुनिया में काम नहीं कर रहा। इसका असर ये हो रहा है कि जो बड़े देश हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग है, मान लीजिए चीन है या इंडिया है, जहां स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग बेस है, वहां पर इन्फ्लेशन, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन कम है। लेकिन ज्यादातर वो देश जो इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थे, जो सामान को बाहर से मंगाते थे, यूरोप में देखेंगे आप, कुछ हद तक मैं कहूंगा अमेरिका में भी वो है, जो इंपोर्ट पे ज्यादा काम करते थे, वहां पर आप देखेंगे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है क्योंकि सप्लाई चेन्स डिस्ट्रप्टेड है। तो इसलिए जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी जो आपने मेंशन किया, तरलता जो रही सेंट्रल में करी, वो भी एक फैक्टर है, सप्लाई चेन्स भी एक फैक्टर है। और इसीलिए मैंने पहले कहा कि जो अब हम देख रहे हैं, देखिए, एक साल तक हमने देखा पूरा विश्व एक ही डायरेक्शन में इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही थी, लेकिन अब हम जब देख रहे हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में अलग अलग स्थितियां हैं, वो स्थिति फर्क है। तो अब आने वाले समय में आप देखेंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी है सेंट्रल बैंक की, वो फर्क होगी। हर सेंट्रल बैंक को अलग नीति अपनानी पड़ेगी। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनके जो टूल्स हैं, जो सेंट्रल बैंक के पास टूल्स हैं, वो काफी लिमिटेड हैं।
वो काफी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कि वो कैसे इसको 1855 तक ये करें। Okay, Puneet, I would like to point out one country and one bank, which is one of the major banks, is the Bank of Japan, which steadfastly resists tightening owing to what it deems are temporary boost to consumer prices. They are refusing to increase the rates. No, you are right. And in fact, to some extent, Bank of Japan has been kind of very adamant that they will not raise rates, and they have kept the yields also pretty low. Largely because you see the conditions in Japan. They have very small population. They still have a trade surplus, a very large trade surplus. So they can actually, and they have a very high GDP. So they can actually, their population can actually afford slightly higher inflation. So that is a political call they've taken. They said that we will not bring down economic growth. And also they are somewhat in competition with countries like China for high technology products. So Japan has taken a call that they will live with slightly higher inflation, but they will not bring down economic growth. So that is again, like I said, this is a call that a particular specific country has taken. Also, please remember that Japan is one of the key countries which provides liquidity to global markets. So there's a huge influence of yen by Japanese central bank, by Bank of Japan, and then those yens of course get converted into dollars and Swiss francs and other hard currencies. So one of the major sources of liquidity in last 1 year in the world market has actually been Japan, and they have continued to maintain that liquidity. पुनीत जी, यहाँ पर हम चीन की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। और ब्याज दर में बढ़ोतरी का जब क्रम शुरू हुआ था तो चीन ने सख्ती के साथ कहा था कि इसके परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। क्या उसकी आशंका सही होती नजर आ रही वर्तमान स्थिति को देखते हुए? देखिए, ये एक बिल्कुल सही बात है कि जो आज हायर इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं दुनिया में, उसकी शुरुआत चीन ने की है एक प्रकार से। और जो सप्लाई चेन की हम बात करते हैं या जो हम कॉस्ट इन्फ्लेशन पुश की बात करते हैं, वो सारा चाइना से वो ज्यादा हम देख रहे हैं। और जो ट्रेड टेंशंस भी हम देख रहे हैं उसमें चीन का बहुत बड़ा रोल भी है, और चीन उसको एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो जानते हैं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग अभी इतनी आराम से शिफ्ट नहीं हो सकती चाइना से, तो उसको वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म जो इम्प्लीकेशंस हैं वो काफी डिफरेंट होंगे। चीन जो है उसको भी कुछ भुगतान करना पड़ सकता है। अभी फिलहाल चाइना में अगर आप इकोनॉमिक कंडीशंस देखें तो वो ईज कर रहे हैं। इनफैक्ट चीन का सेंट्रल बैंक ही एक ऐसा, बैंक ऑफ चाइना ही एक ऐसा बैंक वो सेंट्रल बैंक है जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट को कम कर रहा है, बिकॉज रिजर्व रेशो ने ईज करी है, लिक्विडिटी बैंक्स में बढ़ाई है वहां पर। तो वहां पॉलिसी है वो रिवर्स है पूरी दुनिया से, और वो कॉन्फिडेंट है कि वो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लार्जली बिकॉज अभी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो चाइना में ज्यादा है। Prince, coming back to the domestic market, should investors expect only moderate returns from the market in the present context of high interest rates? One. And two, therefore, their ideal investment strategy should be one, investment in fixed income and systematic investment in high quality stocks for the long term. What's your view? So, okay, I'll attempt to give some answer. It's always very difficult, to call the markets. Most of the people who follow the markets quite closely, they believe that next 1 year is going to be a year of moderate to low returns for the stock markets in general. Which is true because usually when we see liquidity go down and interest rates, which are kind of antithesis to stock market returns, if the interest rates are high, then we will find stock equity returns to be somewhat moderate. So yes, I am also in that same camp that next 1 year probably we will see moderate returns in the stock markets. However, after that, I think in India we will see much better returns. Having said that, another observation we have over the years is that whenever interest rates go higher, growth-oriented stocks are sacrificed for value-oriented stocks. Basically, over the last 10-12 years, if you see, value stocks did not get high valuations, they did not get high PE multiples. Growth stocks were preferred by investors. But as interest rates rise, mostly investors prefer value stocks. Basically, stocks with low PE multiples, with high dividend yields. I think that kind of value migration we are also witnessing right now.
I will also advise investors to look at value stocks right now rather than growth stocks. Third part of the question was, would SIPs be preferable? I think absolutely. SIP is a sure shot way to beat market volatility. So all those investors who do not have the time, resources to devote extra time or be active in the markets, for a passive investor, SIP is a very comfortable, safe way to invest. And I believe that long-term investors should continue to see SIPs. Probably if they can increase, they should increase. This is a good time to buy. And then I think the returns will be very good in the next 2 to 3 years. पुनीत जी, आप ऐसे समय में हमारे साथ जुड़े हैं जब हमें आपकी सख्त आवश्यकता थी। आपका पूरे मार्केट मंत्र टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, पुनीत। थैंक यू सो मच वेलकम। श्रोताओं, आज यदि हम शेयर बाजार पर ध्यान दें तो 8 सेक्टर यानी बीएसई में 8 सेक्टर में बढ़ोतरी हुई, जबकि 12 सेक्टर घाटे के साथ बंद हुए और सबसे अधिक लाभ कमाने वाले सेक्टर में रहा पावर सेक्टर, जिसमें 0.7% की वृद्धि हुई। आइए घरेलू शेयर बाजार के बाद अब हम चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से हांगकांग का हिंग सेंग सूचकांक आज 2.3% लाभ के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.3% की वृद्धि हुई। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.6% ऊपर आ गया। उधर बिकवाली के दबाव में जापान के निक्की 225 सूचकांक में 0.2% की कमी देखने को मिली। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स भी बिकवाली के साथ 0.1% घटकर बंद हुआ। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक बिकवाली ही दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 1.1% नुकसान के साथ चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में भी 0.7% की गिरावट थी, जबकि जर्मनी का डैक्स भी 0.7% नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। In the US, stocks tumbled more than 1.5% yesterday after the Federal Reserve raised interest rate by 25 basis points to check inflation. The S&P 500 declined 1.7%. The Dow Jones Industrial Average and Nasdaq Composite Index fell 1.6% each. The government has said National Highways Authority of India, NHAI, has planted more than 344 lakh plants on national highways from the year 2016-17 onwards by way of annual plantation action plans. In a written reply in the Lok Sabha today, Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said, as per Annual Plantation Action Plan 2022-23, a target of 75.51 lakh plants was approved by NHAI, out of which 69.63 lakh plants have been planted till last month. He said, to monitor the survival and growth of plants, NHAI launched a mobile app, Harit Path, in August 2020. खबरों का सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए एक निःशुल्क मोबाइल ऐप AIS शुरू किया है। इस ऐप की मदद से करदाताओं को अपने वार्षिक सूचना विवरण और अन्य जानकारी देखने की सुविधा मिलेगी। Oil prices dipped today more than 0.5% after Federal Reserve Chair Jerome Powell highlighted banking sector credit risks for the world's largest economy. In intraday trade, Brent crude was trading at around $76.23 per barrel, while WTI crude price was at $70.40 per barrel when reports last came in. We are joined in by our oil expert Narendra Taneja. Narendra ji, aapka swagat hai. A warm welcome to you. Thank you. So, are you happy with the way the price of oil is as of today, $76.23? Is this as per your expectation? Well, low prices are always a happy news for consumers, in India, since we are a heavy, importer. So low prices is very good news. But this is happening mainly because of the anxiety over the health of banks and financial institutions across the western part of the world, most particularly in the United States. But I don't think it's sustainable being up.
demand in India is only going up. Demand in other markets are likely to go up. So therefore, I think the prices will go back to where they were in the recent few weeks. And my sense is if we prepare ourselves, let's say for $80 per barrel on an average, over the next 4 or 5 months, we would be probably in a better position. But this dip is not sustainable. It will bounce back to $80 per barrel. It may go up to 85, 89, at times, may dip below 80. But when you look at the average over the next 3-4 months, I think it's going to be in the region of about $80 per barrel. नरेंद्र जी, यहाँ पर हम जो भारत की तेल की जो मांग है वहां पर रणनीतिक रूप से आपके विचार को समझना चाहेंगे। रूस के साथ जिस तरह का समझौता दोनों देशों के बीच हुआ, उसमें जो तेल की आपूर्ति अपने यहाँ हो रही है और रूस के माध्यम से हो रही है, तो ये हमारी तेल की जो आयात की लागत है उसको पाटने में किस हद तक सहायक हो रहा है? नहीं, बहुत बहुत अच्छा जो भारत ने नीति अपनाई है रूस के तेल को लेकर के, उससे भारत को तो फायदा हो ही रहा है क्योंकि सस्ता तेल हमको मिल रहा है। हमारे यहाँ तेल की कीमत, पेट्रोल डीजल जो आम आदमी के लिए वो काफी हद तक कम। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत चूंकि रूस से तेल मंगा रहा है, इस वजह से पूरी दुनिया में जो तेल है सस्ता है। इसका फायदा अमेरिका और पश्चिम के बाजारों को भी मिल रहा है क्योंकि अगर रूस का तेल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई सिस्टम से गायब हो जाता, अगर भारत नहीं मंगाता, चीन नहीं मंगाता, तो तेल की कीमत आज $120 पर बैरल होती। ये भारत की तेल कूटनीति है जिसका फायदा भारत के उपभोक्ता तो हो ही रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा साथ साथ फायदा जो है अमेरिका और पश्चिम यूरोप के उपभोक्ताओं को भी हो रहा है। So, Mr. Taneja, the oil prices dipped today, having hit the lowest since late 2021, earlier this week. And then after the Federal Reserve Chair Jeremy Powell highlighted banking sector credit risks, the world's largest economy, then the US crude stockpiles swelled. So what repercussion can that have with high stockpiles of the US crude? Well, if the stockpiles are high, but at the same time the banking situation is not brought under control, and shareholders plus the markets continue to lose confidence in American banking system, it would of course have a negative impact on price and even further. So we'll have to wait and watch. It's all very much linked to the largest economy in the world, there's the US. And right now markets are very anxious. They think things might go wrong in American financial system, and that's why the reflection is there in terms of the oil prices. But I think we'll have to wait over the next few days which direction the American banking system goes. But my own sense is demand is not under question and supply also is not under question. So therefore I go back to my earlier statement that $80 per barrel on average, that's probably what we're going to see over the next 2, 3, 4 months. And what about OPEC threatening to cut production? You see, OPEC, even if they threaten to, if oil dips further, they will of course come out with this threat. But I think even OPEC is comfortable given the global, economic situation that $80 is win-win for them as well. They're making good money even on $80 per barrel. Given Ukraine is still not stable and banking system in America is threatened and all that. So $80 for them is a good price. So I think they are very, very sensitive to this. They will play if oil, dips further. But I think they want to maintain an $80 per barrel. And $80 per barrel is the situation where OPEC is happy, Russia is happy, big consumers like India are happy, and global economy more or less continues to be on the recovery path. Okay. Thank you. On that note, thank you very much, Mr. Narendra Taneja, for being with us. आइए कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज समाचार तैयार किए जाने तक सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही थी। सोने का मूल्य अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य विशेष रूप से समाचार तैयार किए जाने तक ₹510 बढ़त के साथ 59,265 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी ₹430 बढ़त के साथ 69,740 प्रति किलो पर थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने के मूल्यों में तेजी थी। ये थोड़ा सा बढ़कर $1,997 प्रति औंस पर था। चांदी भी मजबूती के साथ $23 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। And it's time for us to wind up today's market mantra. So the headlines once again. Key domestic stocks snap 2-day winning streak to close with losses of around 0.5%. Rupee jumps 40 paise against the US dollar, and US Federal Reserve and Bank of England hike interest rates by 25 basis points to curb inflation. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.
Market Mantra. Market Mantra.